Well, on behalf of Institute of Harmony and Peace Studies, New Delhi, a very good evening and very warm welcome to every one of you present here. Thank you. Thank you. Professor Ravel Singh also has joined. Thank you, sir. Thank you. Thank you. How are you? It's a way of being together amidst COVID and also winter to warm up, Yeah. to keep our ideas and insights rotating, and thus to make the society better, a little better than otherwise it is. Well, a few things were by way of situating the webinar. It's nice being here with all of you, though on a virtual platform after some time. All of you have spared your valuable time, have taken the trouble of being here. I appreciate your goodwill and interest, along with your commitment to the cause of harmony and peace in the society. All of you are professors and experts from various disciplines, universities and institutes, well, from different parts of the country. As scholars, we shall critically analyze the theme in question, contribute to the generation of knowledge and opinion making. That's the purpose of this evening. All of us hail from different religious communities, but speaking about one's own religion is not expected here. A critique of the title in question is what is required. This webinar is live streamed on the YouTube channel of the Institute with the name Institute of Harmony and Peace Studies. What's more, the Institute has a data bank of over 30,000 emails across the country and the globe. Several research institutes and universities often take up the insights for their classrooms. Your valuable insights will be circulated, thus far and wide. By way of time limit, I would suggest 5 to 7 minutes would be good enough. I believe we could proceed to a second round by way of fine-tuning the topic. I wish to request all of you to kindly stay on till the end as well. A few things by way of introducing the theme, religion and ethics. It's an old topic and ever new, familiar, general too, wide topic, but it has a lot of specificities within, and we are going to unearth that, diverse perspectives. My engagement with interfaith relations and social harmony and peace in this society for the past over 40 years has left me very much all-inclusive and secular as regards religion and ethics. Religion has to be ethical, necessarily so. Ethics is the fruit of religion. Without ethics, religion is fruitless. But it is not necessary for ethics to be religious. It may or may not be. Ethics can be religious or non-religious.
As a matter of fact, there is too much of religion and too little of ethics in social life, if I can say so. Mere observances of superstitions and rituals do not elevate the believer, but only one who engages with the values. One makes an upward movement in religion or in life. Living religious values strengthen the ethical fiber. Religion does not really benefit those who do not live religious values. Viggo Mortensen says, I have a work ethic. If I say that I am going to do something, I do it. Mean what you say is ethics. Without ethics, religion becomes a liability. Only with ethics, religion becomes a blessing. Religion has to be judged by social ethics and principles. Religion is and has to be oriented to the well-being of the people. Ethics has to be the foundation of religion. What makes human beings humane is what ethics is all about. Life has to be gauged by the quality of ethics. Real ethics can be found only beyond religion. Ethics has to be grounded on social principles and values, even in religion. Only then unity and harmony among religious and social communities are possible. That's all I would like to say by way of introducing the theme. And I would like to request now Professor Lalmanti Chatani, who is head of the Department of Political Science, Maharaja Siaji Rao University, Baroda, to present your views. Professor Lalmanti. Good evening, Dr. Thomas, and good evening to all the participants of the webinar. Let me thank Dr. Thomas for inviting me here today, as well as for giving me this very difficult task of being the first. Louder. Can you hear me now? Is it better? Yeah. All right. So thank you for inviting me here today, and moreover, for giving me this really incredulous task of opening the remarks, although it will be very difficult to say anything different from what you have said in your opening comments. However, the way as introduced by Dr. Thomas, I am a political scientist or political theorist. And the way I would present the way I look at ethics and religion, and I stand corrected. Ethics, if you were to ask, if I were to understand ethics, I think ethics can be a gamut or a basket of moral principles that contribute to governing a society. So we need principles to govern society. Why? Because fortunately or unfortunately, none of us are happy, or none of us prefer a life of isolation. We know what happened when we were all put into isolation during the COVID, the first wave of the COVID outbreak. And that was something which we considered as not natural, not normal, not desirable, even though many of us were with our families. However, social interaction was limited. And this is what we think also social media is contributing to in terms of social interaction. But we are social beings, and therefore ethics contributes in terms of a basket of principles which will contribute to governing us when we get into
social relations. Now, just to put in a few of what such ethical principles can be, the first obviously is justice. Everyone should get what is due to them. So it is not absolute. If I deserve ration, I should, subsidized ration, I should. If somebody else does not deserve it, one shouldn't. So the first ethical principle I'd like to flag out is justice. Another, I'm not exhausting possibilities. I'll just put three ahead, and then there are many, many more, obviously. The second ethical principle I would like to flag is fraternity. And fraternity really does not mean brotherhood, which comes from natural considerations. And obviously, fraternity, therefore, cannot be worked out on religious considerations. That we all belong to the same group in terms of our ascribed identities. We're all born women, we're all born men, we're all born Christians, we're all born Hindus, is not fraternity. Fraternity is the exit and entry of people into groups on the basis of choice and freedom. So fraternity is the second, and obviously the last is common good. There should be a principle of common good, which is gearing this society together to move ahead. There should be an idea of the common good. What is religion? Religion, in my opinion, is a structure of faith and worship. We all have faith and worship, but when you institutionalize it into structural forms, it takes the form of religion. I don't want to say too much about religion because I'm more guided by ethics. Now, what is the relationship between ethics and religion? In my view, I think they contribute to one another, as Dr. Thomas said. So religion contributes to legitimizing ethics. Without religion, without this structure telling us that this is good, this is just, this is the basis of our inclusiveness, it will be difficult for us to believe or to agree with ethics. So for instance, if I were to say that it is good that we must treat everybody as equal, per se, it may have no legitimizing principle. However, if I say we are all born equal in the eyes of God, then that becomes a legitimizing principle. So religion facilitates the legitimizing of ethics. And in the absence of religion, if you remove religion from ethics, ethics will collapse. Similarly, if you remove from religion, you remove ethics. See, in religion, there is no place for ethics. There is no place for common good. There is no place of justice. There is no place of fraternity. We are forced at this time to use force for people to believe. Why should I believe that this is God, this is divine, this is true? You will have to use force. You will have to use danda. You will have to use coercion for people to believe. And we see this in some societies. When a society gets rid of ethics, as Dr. Thomas was talking about in his opening remarks, when a society gets rid of ethics, that society uses coercion for people to believe that this is religion, for people to agree that this is religion. So let me just repeat that quickly. Ethics contributes to the legitimization of religion, and religion contributes to the legitimization of ethics. They kind of complement one another. As I said, in the absence of ethics, religion, you'll have to force me. For instance, if I'm born Dalit, I know I'm born woman, and you tell me that my religion has no place for me, why should I agree with it? I will agree with it only when you use force. And this, I will agree with it. I will agree with it when religion becomes ethical. So I think they complement one another. But there is something else which we need to do to keep this complementary relationship going, because it is not natural. It is not natural. We all know we are powered, we are self-interested, powerful people. There are some people who have a lot of power. We all have our self-interest. And obviously, from a Christian theological understanding, this is the fall. We are in the fall. And this is not heaven. This is not Satyug. This is not Garden of Eden. We know that we are somewhat self-interested. So how do you keep the relationship going? I think 3 parameters. The relationship between ethics and religion will have to be on reason. It will have to be reasonable. You can't make unreasonable religious or unreasonable ethical claims. Both don't stand. The second is you will continuously have to revisit the relationship. It is not a constant.
It is not a constant. I'm just ending. It's not a constant. Sorry about that. It's not a constant. And the third parameter, that first is reasonable. Second is you continuously have to revisit. So for instance, maybe earlier we had the concept of untouchability. Today to talk about untouchability would be really far-fetched. And the third is that you would have to recognize that there is a plurality of religious ways of legitimizing ethics. There is a plurality. So recognition would be the third. So reason, revisiting or revision, and recognition. And I think this is how we keep religion as ethics and ethics as religion, or as rightly pointed out in the title by Dr. Thomas, religion and ethics. Hopefully, we are not ending up in a world which is religion or ethics. I just hope and pray that this is not a world which is religion or ethics. It is a world which is religion and ethics. Thank you very much. I think I've said what I had to say. Thank you. Yeah, thank you very much, Professor Lajvanti. You started with common grounds for ethics, justice, fraternity, common good, and the like, which religion is supposed to promote. At the same time, it's common for everyone. One who doesn't subscribe to a religious system as well. And you proceeded to making it complementary. Religion and ethics are complementary to each other. If they detach themselves one from another, I think it becomes meaningless. Reason has to be the strong basis to make religion ethical. At the same time, life also ethical. Reason everyone has, it's God-given, and that reason, not necessarily it is confined to the religious systems. Reason is common. So thank you very much for highlighting substantial insights in this regard. Thank you very much. And may I request Professor Isadam Khan, the Secretary General, Institute of Objective Studies, New Delhi, to present your views. Professor Izzat M. Khan. With the permission of Chair, let me at the outset express my gratitude to Dr. Thomas, who has invited me for this small intervention. Themes are highly exhaustive and very, very relevant in present context, because what we are seeing, religion and ethics and all these things are being used in a much more undesirable way, as these have been advocated by various experts. Let me put forward my point of view at this point of time. I'm trying to see the whole gamut of activities regarding religion and in ethics in terms of the basic character of man. To me, man is a spiritual, moral being. And this requires a lot of things which contribute to the development of his moral sense or his moral personality or his spiritual personality. If one looks at, you will find that man broadly can have 4 aspects of personality. One is his physical personality, then his emotional self, then his rational self, and finally the spiritual self of a man. Religion actually concentrates on the last one of it, the spiritual self of man. If the spiritual self is really regulated properly, then all other things will follow in line, and
the religion and ethics will be able to contribute to the welfare of human civilization in a big way. And if these things are not really put in right perspective, then aberrations can take place, and lot of other kind of things will really creep in. So my simple point is that religion is meant to strengthen the spiritual self of man, that regulates his mind the worldly things or the physical things which come in his way. So my submission is that religion should really be looked into from the perspective of enriching the spiritual personality of man. And that is why you will see that all communities have got somehow or some form of religion, and they people practice religion in different forms, and they are benefited, sometimes they are not. So that way, a regular inquiry about the role of religion and ethics is needed. And people and institutions like Institute of Harmony and Peace are there to really struggle and to try to understand as to what is the importance of religion in march of civilization and what is the contribution of ethics in this field. There is a lot of literature, various kinds of values are there related to the canons of religion, related to behavior of individual, organization of society, and so on and so forth. You can classify them into as many as human activity. So ethics is a touchstone which tells you the quality of religion also. If ethical values are not observed, then the quality of religion is doubtful. And it is doubtful that the adherents of that religion are truly following the path of the fundamentals of that religion. So the real test of religion and its quality and its observance, all these things really need to be tested on the basis of the ethics which is being followed in the name of a particular religion. Thank you very much. Yeah, thank you, Professor Zedam Khan Sahab. You rightly started regretting on the undesirable ways in which religion is being used in this world, unfortunately so. Thank you. You rightly stressed the spiritual, moral person, the personality, the character of the human being with which God has created him and her, and the emotional, the rational, the spiritual dimensions that are inherent in it. Well, for the welfare of the civilization, you rightly said the touchstone of religion has to be ethics. And if ethics is then not there, the quality of values are not there, I think the role of religion will not be meaningful. So that way, you rightly invited all of us to stress on the quality of ethics that has to emerge from religion. Thank you, sir, for these great insights. Thank you very much. Now, ahead, I would like to request Professor Vikramendra Kumar, the Professor, Department of Sociology, Delhi University, New Delhi, to present your insights. Thank you, sir, for giving me this opportunity and inviting me to discuss on the topic religion and ethics. I feel that it's a very pertinent topic to
to engage with some sort of discussions, especially when the world is passing through transition and grappling with so many issues and crises. These topics and encouragement of the discussion on this kind of topics will definitely ensure peace and harmony in the society. I'll use a couple of examples to understand this, as we always believe that religious believers who make ethical judgment solely on the basis of their religious beliefs see these two as indistinguishable. I mean, it's very difficult to distinguish these two words from each other, religion and ethics. Some see the wrongness of divorce, for instance, as consisting in its offense against God's law, while some people see this their religious and ethical duties as compatible and even coextensive. Another example I would also like to use here as a case of adultery. Some see adultery as wrong because it is forbidden by God's law and because it involves deceiving marriage partners. So the paramount question here is that how will you understand religious basis of ethics? I feel that religious belief can provide a powerful basis for ethics. If people believe that supernatural being gives them guidance on how to behave, and if they see this force with whom they have a personal and emotional relationship, their conviction about what they ought to do are likely to be held very strongly. In this sense, I would like to say that at the same time, religion also provides us a sense of purpose. As individuals, they know who they are, where they are intended to go, and where to look for guidance on their journey. However, there is always some sort of disagreement. We see people may differ from my views as well, particularly in the light that disagreements as to which religious worldview is the correct one. And this disagreement occur not only between the major religious traditions, but within them. For instance, in Buddhism, there are the Theravada and Mahayana paths to enlightenment. Within most religious traditions, there are also fundamentalist and liberal school of thought. Fundamentalists tend to see good behavior as a matter of obeying what they regard as the specific instructions of Holy Scripture. Whereas liberals in the same religions consider they have freedom to make their own judgments on how to interpret religious guidance in specific circumstances. Now, another question I would like to argue and engage in that does ethics need religion as its basis? Many people think and believe that atheists cannot have a firm basis for ethical convictions. This is not surprising, since most people have lived in societies dominated by religious traditions, as all of us are coming from different religious background. Consequently, many people think that if you have no religious beliefs, you can have no source of your ideas of what is right and wrong. Unsurprisingly, atheists challenge these ideas, claiming that their secular ethical convictions have firm foundations and they do not need to see other people as created by a God in order to have good reasons to promote their well-being. Their experience of suffering and happiness of themselves and of people close to them is sufficient to convince them of the value of striving for the well-being of all. So any religion is a codification of good and moral ethical means to attain the ultimate aim of human life, and that is salvation. The proponents of various sects and philosophies have always enunciated
this very basic tenets of religion, and they are usually termed core concepts. If we see right from Vedic culture to Sanatan and Islam to Christian to Buddhism, all religion have declared some practices as sacrosanct. In this regard, I feel that ethics is the measuring and differentiating the rights from the wrong and the overall objective of utilitarian welfare of all. Religion could be a torch bearer in this pathway to walk on the concept in reasoning good for all. But being religious is not the guarantee that one will always indulge in ethical way. Even an atheist could be in possession of high moral conduct and ethical values, whereas a blind proclamant of a religion infested with orthodoxy and delusion of superiority of his personal thoughts could be a dangerous combination of particularly for humanity in general and ethical standards in particular. So many examples are we can quote which is happening in different parts of the world as well for this. Now, one thing which I would like to argue that what is the role of religion in public life? And that we can answer this question in this way that religion helps in establishing ethical conduct in individuals, which is reflected in public life of individuals as summation of individuals is public. For example, Buddhist religious ethics has helped in harmonizing public life in Bhutan, whereas where happiness of everyone is emphasized over material position. At the same time, religious belief is at the root of charity efforts, which is present even in capitalist countries. Such efforts help alleviate sufferings of people on a larger societal scale. Examples can be many. At the same time, through religious beliefs, or though religious beliefs play a very positive role in ethics in public life, there is other sides of the coin as well. Negative points can be many. I don't want to discuss those negative points here in this webinar. To sum up, I would like to argue that religion is a means towards attaining individual spiritual enlightenment, as some of you were also talking about, where precepts within it for public functioning should be understood in the context of the development of the religion. At the same time, the secular ethics developed through human history should be prioritized over religious beliefs in public life. This is my views regarding this. Thank you. Thanks a lot for giving me opportunity. I hope I was able to do the justice to the topic. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. You rightly say, emphasize the stamina of religion. Yes. For making ethics strong in social life as the torch bearer, the capacity for being the torch bearer for the social life. At the same time, you rightly emphasize that it's not beyond religion also. The secular principles and values can and have to strengthen the ethical fiber of the social life. And thus, religion, the role of religion also you rightly stressed that it has to take care of the public conduct, the public functioning. That is the source of nourishment to the right and wrong, distinguishing from the right and wrong, and at the same time the good of all. Public life and public persons are supposed to take care of the good of all,
And ethics is, religion has a duty to supply that stamina at the same time, and ethics can only help in taking care of the public good. So thank you so much for your all the insights. Thank you very much, sir. And ahead, I would like to request Professor V. Sagar Jain, Professor, Department of Jain Darshan, Sri Lal Bahadur Shastri, Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi. Professor V. Sagar Jain. Good evening, everybody. Good evening, my friends. I would like to speak in Hindi language. Yeah, you are welcome. You are welcome. Welcome. Thank you. देखिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रिलीजन एंड एथिक्स। आज हमको इस विषय पर सोचना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। माने कोई तो कारण है कि जिसके कारण धर्म ने, संप्रदाय ने कुछ ऐसी असुविधाएं उसके नाम पर समाज में खड़ी हुई कि जिसके कारण हमको आज ये सोचना पड़ा कि धर्म और नीति, और हम उसमें भी आज जोर देकर ये कहने का मन हम सब का कर रहा है कि हम पहले नीति को बड़ा बताएं। लेकिन वास्तव में बात ये है कि धर्म तो एक इतनी अच्छी चीज है कि उसके बाद में व्यक्ति अनैतिक हो ही नहीं सकता। धर्म कभी धर्म का विरोधी नहीं होता, धर्म कभी नीति का विरोधी नहीं होता। जिसके जीवन में थोड़ा भी धर्म आया होता है वो तो बहुत एथिकल पर्सन बनता है। उसके मन में बहुत दया आती है, उसके मन में बहुत सत्य आता है। मैं तो जैन धर्म का विद्यार्थी हूँ, मैं जैन धर्म को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और बहुत देखता हूँ। और कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ ऐसा मिले तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं उसको कहता हूँ, अरे जैन धर्म तो बहुत ही बारीकी में जाकर के वो किसी जीव को मारने से हिंसा नहीं मानता, खाली वो तो कहता है आपने मन में किसी के लिए बुरा सोचा, ये भी हिंसा है। जैन धर्म में बहुत साफ साफ कहा है कि किसी को मार देंगे तब हिंसा होगी, ये नहीं है। हमने किसी के बारे में जरा बुरा भी सोचा, प्रोफेसर रावल सिंह जी, बहुत इनको सुनता हूं मैं, आनंद आता है। तो देखो, ये जो जैन धर्म है इसमें मैं देखता हूं, किसी भी धर्म में देखो तो सबसे पहले यही है कि किसी को दुख नहीं देना। पहला धर्म है किसी को, छोटे से जीव को भी, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े इन सबको आत्मा माना, हमारे समान आत्मा माना। जब हम सब जीवों को आत्मा मानते हैं तो अपने ही आप हमारा जीवन बहुत एथिकल हो जाता है, बहुत शुद्ध होता है, बड़ा पवित्र होता है। इसलिए भैया मेरी तो समझ में ये आता है कि धर्म कभी भी नीति का विरोधी नहीं होता, एथिक्स का विरोधी नहीं होता, बल्कि उसका सपोर्ट करता है, उसका बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है। तो इसलिए मेरे गुरुजी मुझसे कहते थे बार बार कि देखो एथिक्स में और रिलीजन में क्या संबंध है, एथिक्स में और रिलीजन में क्या रिलेशन है। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। वो कहते थे देखो एथिक्स तो है कपड़े की तरह और रिलीजन है गहने की तरह। आप इमेजिन करो कि किसी महिला ने कपड़े नहीं पहने और गहने पहने तो कितनी सुंदर लगेगी वो। अरे पहले कपड़े चाहिए,
बाद में गहने चाहिए। तो जीवन एकदम एथिकल होना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, दूसरे को सहन नहीं करता है। जैन दर्शन में एक स्यादवाद सिद्धांत है, अनेकांतवाद। वो कहता है आप दूसरे के व्यू की रेस्पेक्ट करो। हर एक व्यक्ति का अपना अपना व्यू है, और कोई व्यक्ति किस व्यू से देख रहा है वो उसका व्यू है। आपको, और फिर देखो, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विरोध में भी हो, कोई व्यक्ति गलत भी बात कह रहा हो, तो ये हमारी बहुत बड़ी कल्चर है कि हम उसके साथ डायलॉग करते हैं। हम कहते हैं मतभेद रहे, लेकिन हम मनभेद नहीं रखते हैं। मतभेद होते, विरोधी को खत्म करो, मारो, नष्ट करो, हथियार उठाओ, ये हमारी कल्चर नहीं है। चाहे कि 50 साल बीत जाए, लेकिन हम ये करते हैं, दिल मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाते रहिए, बात बने या ना बने, बात तो चलाते रहिए। तो बात को चलाते रहना, कम्युनिकेशन करते रहना, विक्रमेंद्र भैया ये बहुत जरूरी है। यस एथिक्स, सर, यस सर, हाँ, एथिक्स तो बहुत ही, ये तो कॉमन है। ये हम सबसे पहले मनुष्य हैं, हम सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर हमारा पर्यावरण ही खराब हो गया, अगर हमारा समाज ही खराब हो गया, तो हम कहाँ जी पाएंगे? फिर मैं जैन कहाँ रह जाऊंगा? कौन सिख रह जाएगा? कौन ईसाई रह जाएगा? कैसे काम चलेगा? इसलिए भाईचारा, प्रेम, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम धर्म करता है। मैं तो यूनिवर्सिटी में 40 साल हो गए, और जैनिज्म को पढ़ते पढ़ाते, बाहर जाते, सब जगह मैंने, मेरी लाइब्रेरी भरी हुई है। खूब पढ़ता हूँ, करता हूँ, पढ़ाता हूँ, रात और दिन यही काम है। लेकिन मैंने यही समझा कि मानवता बहुत बड़ा धर्म है, नैतिकता बहुत बड़ा धर्म है। किसी भी जीव को जरा सा भी दुख नहीं देना चाहिए। बस मैं तो मोटी सी बात ये समझाऊं, इसको समझ लो तो एथिक्स भी आती है, रिलीजन भी आता है, सब आता है। ऐसा मेरा मन है। आप सबने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर वीर साहब, जैन साहब, आपने एक उदाहरण के साथ अब इस प्रकार समझाया कि नीति पहले, धर्म बाद में। पहले पहले कपड़े के समान है गहना, उसके बाद में भी, बाद में ही ये कामगार है। तो इसलिए नीति के संदर्भ में इंसानियत ही धर्म है, भाईचारा ही धर्म है। तो इसलिए इंसान पहले और धर्म बाद में, और ये नीति पहले और धर्म बाद में, इस रूप में आपने समझाया। और शादवाद जैन संदर्भ में तो खास है, यानी हम सब अधूरे हैं, हर इंसान अधूरा है, वाह, हर धार्मिक परंपरा अधूरी है, हर समुदाय अधूरा है, हर देश अधूरा है। 100% इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए वो शादवाद है, शायद हम सही है, शायद हम सही नहीं है। ये एक बात भी हमारे पास, हमें सीमा में, मर्यादा में रखने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर, प्रोफेसर वीर साहब, जैन साहब। आगे मैं इन साइंस के लिए आगे मैं एडवोकेट मोनिका शर्मा को बुलाना चाहूंगा। आप सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में। एडवोकेट मोनिका शर्मा। Good evening, everyone, and I am very, very thankful to Dr. Thomas, who has given me a chance to express my views to such a wonderful topic, which is the need of an hour.
and I hope I do justice to this. And I have heard many learned persons who have expressed their views, and it really gave an enlightenment to the topic, religion and ethics. See, religion and ethics, I firmly believe, is such a topic which cannot be separated from each other. It's so deeply interwoven in each other that it is complementary of one another. If we take out the thread of one, the fabric is all torn. So it has to be in a concept that religion and ethics, they go hand in hand and they are complementary to each other. So what is religion basically? Do we there are around 10,000 religion which has been estimated in the whole world, and no scholar has been able to give a definite definition to this religion, because religion is not a belief in god, it is an essential doctrine. It persists in every culture. It practice everybody who's following certain rituals, feast festivals, etc., is following a particular religion. Even our constitution says that it is not necessary that a person should be following a particular religion in a form, in a shape. It could be in a invisible form, because it's a practice, what you follow, what you believe in. And it's not a religion is not from today. It is age old, age long. It's an ancient history, it holds an ancient history, and it has many stories. And I believe those stories basically are meant to make sure that whosoever follow those religion understand through those stories, so that they are able to follow the ethics which religion want everybody to follow, so that there is a peace and harmony in a society. Because I firmly believe no religion tell us to be in a discord, in a disharmonious uh, situation. Every religion aims at, goals at, to go towards the harmony and towards the peace of a society. So there are certain tools which have been adopted by these religions to come to the conclusion of harmony and peace, and these tools we can say is ethic basically. Because if we follow public order, morality and the health of a society, then we are actually following the ethics of that particular religion or any religion force. So we cannot say that they are separate. They are so much dependent on each other that if one goes in vain, the other itself is in a toss. Now, what we basically thinks is a ethic. Ethic is, I feel, ethic is basically it has a golden rule. What you think, what you want from, what you want others to do to you, they expect the same from you. If you are doing injustice to others, you never expect justice for yourself. If you are in not in sharing love, or if you are doing wrong to somebody, it's there, you are going to get the same results. So basically it's to understand what is good and what is bad. Ethics tries to make us understand what exactly one has to follow to have a harmonious society. And this is also has been supported by our constitution, which is secular, as you all know. For them, religion, of course, they do not support any particular religion, but they make sure that nothing goes wrong in the garb of religion. Everything, is taken care of. Ethics basically is, I must say, it's provide us principle of justice. It provides us autonomy, veracity, the obligations which one has towards the society via root religion. Because it becomes easy for every common person to understand the ethics of a particular religion, so that they give back to the society the best of their conduct for a good society. So the main aim of religion and ethics is to have a good society in which we are living. Because if we are not living in a good society, definitely we cannot expect our generations to have a good society in future, or to have a good place to live for in future. And this has been very, very much supported by our constitution. And because it firmly believe in samanta, which article 14 says that everybody is equal before law, whether of any religion or any caste or any creed.
It believes in prohibition against discrimination on the basis of religion or caste, which is very much enshrined in Article 15 and 16. So our constitution itself is a secular, and it supports that one should not deviate from the path of ethics, taking the name of religion, so that discord appears in the society. I would like to give an example. It's being said that temple is basically, I'm not, emphasizing on any particular religion, but it's just for an example. I'm saying temple is a religious place, but when it goes against the values it goes against the ethics of the society, then law has a power to take it in its hand. It can go beyond the rituals to take care of the situation, so that the religion discrimination does not occur in the society. And for that reason, our constitution is very well versed to make sure that all the ethics are followed properly. But now I would again like to highlight certain points of the ethics which different sects of the say for if we go in for say Sikhism, the teachings of Guru Nanak, they always say, if you want to meet God, serve the poor. Similarly, for the Christianity, they say, if you want to, they emphasize on moral building. So, religion, according to me, religion and ethics are so interwoven that we cannot separate them. Because if we follow the religion properly, definitely we are going to follow the ethics, and the result will be good. But if we start having a biased attitude towards any religion, then ethics will take a backseat, and the result of it won't be a good for a future, and won't be a good for a society to live in. This is basically my viewpoint, where I have tried to emphasize that how they go hand in hand. Thank you. Thank you. Yeah, thank you, Monica ji, for rightly emphasizing the complementary character of religion and ethics. Well, the right orientation of religion, as you said, is through stories to emphasize and build up ethics. Ethics is needed basically to treat the other the way you like to be treated, to distinguish good and bad, and thus for harmonious living in the society. This is to consider each other on equal footing, and this is very much stressed by the Constitution, and no doubt. So because of that, the religion, the orientation of religion is ethics, and the ethics helps people to live within the framework of principles, and that is what Constitution is for. So rightly stressing on the Constitution also, you made your point. Thank you for your insights. And ahead, I would like to request Professor Muhammad Habib Sahab, your head of the Department of Religious Studies, Punjabi University, Patiala. Professor Muhammad Habib. Thank you, Father, for giving me chance. I'm thankful to the Center of Harmony and Spirituality to giving me chance to listen you all. All the participants, I listened them. They enlightened me a lot. Madam Chattani and Dr. Jem Khan, Dr. Vikramendra, and Dr. Veer Sagar Jain, Dr. Monica Sharma. Your all ideas were very enlightening and correlating particularly religion and ethics. Father rightly said that if no ethics, then religion is fruitless. Basically, एक बहुत अफसोस की बात है कि
हमें ये डिस्कस करने की जरूरत पड़ रही है कि रिलीजन और एथिक्स का आपसी तालमेल क्या है, जबकि एथिक्स ही रिलीजन है और रिलीजन ही एथिक्स है। अगर एथिक्स ना हो तो फिर रिलीजन किस चीज का? रिलीजन है ही इसीलिए कि एथिक्स इंसान के अंदर पैदा किया जाए। प्रोफेसर खान ने बहुत अच्छा समझाया कि इंसान बेसिकली स्पिरिचुअल सेल्फ है, वो मैन रेगुलराइज अगर हो जाए तो सारा मसला हल हो जाता है, उसके अंदर रिलीजियोसिटी पैदा हो जाती है और एथिक्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली स्पिरिचुअल बीइंग, वी आर टू पर्सनैलिटीज। अगर हमारा जो स्पिरिचुअल एसेंस है, अगर उसके अंदर सही मायने में वो धार्मिकता पैदा हो जाए तो उसके बाद में धर्म के इस तरह के इश्यूज हमें सामने नहीं आते कि हमें ये सोचना पड़े कि धर्म एथिक्स पैदा कर रहा है कि या नहीं पैदा कर रहा है, या एथिक्स और धर्म का आपसी ताल्लुक क्या है। अगर एथिक्स ना हो तो धर्म असल में धर्म ही नहीं है। मेरे ख्याल में धर्म अभी डबल एज स्वॉर्ड की तरह से एक्ट कर रहा है सोसाइटी में। जब ये धर्म कम्युनलिज्म के साथ जुड़ जाता है और रिचुअलिज्म के साथ जुड़ जाता है, जो आजकल इसका सबसे ज्यादा जाहिरी पहलू सोसाइटी में नजर आता है, कम्युनलिज्म या रिचुअलिज्म, या धर्म रिचुअलिज्म के नाम पे देखा जा रहा है या कम्युनलिज्म के नाम पे देखा जा रहा है, तो ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वर्क करता है। और जब धर्म को फोकस किया जाता है उससे अंदर से वैल्यूज ड्रॉ करने के लिए, इंसानियत पैदा करने के लिए, तो ये धर्म फादर के विचारों में कि वो फिर हमारे लिए फ्रूट पैदा करता है और ह्यूमैनिटी के को सर्व करता है और इसका सही पर्पस हमें हासिल होता है। डॉक्टर जैन ने भी जिस तरह समझाया कि हमें धर्म को और एथिक्स को किस तरह से आपस में लेना चाहिए और एथिक्स किस तरह से डेवलप करने चाहिए। मैडम अभी मोनिका शर्मा ने कानून के हवाले से बताई कि ये हमारा जो कानून है वो बड़ा सेकुलर है और वो एथिक्स को प्रिजर्व करता है और उनको सोसाइटी में बाकी रखने के लिए गार्जियन का रूप भी अदा करता है। लेकिन जिस तरह अगर हम सोसाइटी में देखें, जिस पॉलिटिक्स के हाथ में रिलीजन एक हथियार बन गया है और एक गेम है जो रिलीजन के नाम पे खेला जा रहा है सोसाइटी में, जिसको हम सब फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिस तरह से हो रहा है, पॉलिटिक्स का जिस तरह से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल्स का पॉलिटिकल यूज, ये कानून के जरिए या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो गार्जियन है हमारे सेकुलर वैल्यूज का, मैं समझता हूँ उसको उसकी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आजकल के हालात में। क्योंकि अगर हमने इसको नहीं रोका उस तरह से और ये आगे ये चीज और बढ़ती गई तो हिंदुस्तान में के हालात और हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक उस तरह के होने की पॉसिबिलिटी है जिस तरह के हमें अफगानिस्तान में दिखाई देता है। जिस तरह की चीजें बढ़ती जा रही हैं तो धर्म के नाम पे हम बातें बहुत कर लेते हैं और उस तरह की उसकी फिलॉसफी के ऊपर, उसकी थियोलॉजी के ऊपर और उसकी धर्मों पर पर्सनैलिटीज के ऊपर, उनको ग्लोरिफिकेशन के ताल्लुक से, रिचुअलिज्म के ताल्लुक से ये तो, लेकिन और हमारी सेंसिबिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि मामूली बातों के ऊपर हम किलिंग कर देते हैं किसी इंसान का, जबकि धर्म में काइंडनेस, ब्रदरहुड ये चीजें हैं, ये चीज इन चीजों के लिए है। तो इसके लिए जरूरत है, जो मैं समझता हूँ कि इंटरफेथ डायलॉग को, जिस तरह प्रोफेसर जैन ने कहा, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि सियादवाद और एक अनेकांतवाद के एक सहनशीलता अलग अलग समाजों में और कम्युनिटीज के अंदर पैदा की जाए और ताकि धर्मों को के अंदर एक कोहेरेंस पैदा हो और एक ये विचार पैदा होना चाहिए कि धर्म बेसिकली एक, जो मैंने धर्म को समझा है मेरे ख्याल में, गॉड अगर उसका कंसेप्ट जो मानते हैं उनके हिसाब से, तो गॉड एक ही हो सकता, दो नहीं हो सकते, बहुत सारे नहीं हो सकते। यूनिटी ऑफ गॉड एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड एंड यूनिटी ऑफ रिलीजन, रिलीजन एक है, सारी मानवता एक है, रब भी एक है। जो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रिलीजन है, इसको खत्म इस आधार पर किया जा सकता है कि हम रिलीजन को स्टडी का हिस्सा बनाएं
हमारी एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए धर्म को स्टडी कराना हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ताकि हमारी जनरेशन ये समझ सके कि बेसिकली धर्म का पर्पज रिचुअलिज्म नहीं है, कम्युनलिज्म नहीं है, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट हाइप करना नहीं है, बल्कि इसका पर्पज है वैल्यूज का इंसान के अंदर आना। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जब ये स्पिरिचुअल वैल्यूज, क्योंकि धर्म का पर्पज है इंसान के अंदर वैल्यूज पैदा करना, अगर वो पर्पज नहीं रहा तो धर्म फिर धर्म ही रहता ही नहीं, वो धर्म नहीं है, उसको कुछ भी कह दो, वो एक टूल ऑफ सैटेनिक टूल बन जाता है। वो अलग अलग लोगों के अलग अलग मतलब आज के जमाने में तो ये टूल खासतौर से पॉलिटिक्स का बना हुआ है जिसको हम फेस कर रहे हैं, और जो सारे समाज को पे असर पड़ रहा है। आप लोग खुल के नहीं कहते, लेकिन असल बात यह कि हम इससे दुखी हैं, जिस तरह से पॉलिटिकलाइजेशन रिलीजन का हो गया है हमारे सेकुलर इंडियन सोसाइटी के अंदर, और वो हमारे फैब्रिक को तोड़ रहा है, हमारी हार्मनी को तोड़ रहा है, हमारे पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत जरूरत है कि हम सारे स्कॉलर्स को और सारे ह्यूमैनिटेरियंस को एक प्लेटफॉर्म पे आकर इसकी अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, डेयर करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए, ताकि सोसाइटी को राइट डायरेक्शन में रखा जाए और इंडियन सेकुलर वैल्यूज को बचा के रखा जाए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशन के जो गार्जियन है सबसे बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसको भी आगे आना चाहिए, और हमारा जो वो है हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको भी इसके लिए बहुत ज्यादा आगे एग्रेसिव होने की जरूरत है कि सोसाइटी को इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकाला जाए और पीस और हार्मनी को प्रिवेल किया जाए। तो मैं यही समझता हूँ कि धर्म के ताल्लुक से जितने भी विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने अपनी बात रखी, वो बहुत ही वैल्यूएबल बातें हैं और वो इंटरकनेक्टिविटी की बातें हैं। ठीक है, आई एग्री विद ऑल देम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके दरमियान में मुझे ही बात करने का मौका मिला, लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करने का आदी हूँ। असल मसला ये है कि हमें कोर पॉइंट को पकड़ना चाहिए, और जिस तरह से प्रोफेसर खान ने कहा कि जो असल स्पिरिचुअल वो है इंसान की, उसको मजबूत करने की जरूरत है। जब वो मजबूत होगी तो इंसान के अंदर वैल्यूज पैदा होगी, ईमान की ताकत जिसे हम बोलते हैं। धर्म में जैसे कई सारे स्कॉलर्स ने बताया कि फेथ भी को जितना मजबूत होगा फेथ, उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतनी वैल्यूज अच्छी आएंगी। सही बात है, फेथ यानी रब के साथ इंसान जुड़े और इंसानियत के साथ जुड़े। और जिस तरह से गुरु नानक का भी जिक्र कर रहे थे एक विद्वान, कि गुरु नानक ने जिस तरह से कहा कि वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा वो जो ना विचारे। धर्मों के नाम मतलब ये सारे के सारे जो वो है धर्म ग्रंथ, ये सब हमारे हैं, वेद हमारे हैं और कुरान हमारी है और ओल्ड टेस्टामेंट हमारा है, न्यू टेस्टामेंट हमारा, जितनी भी धार्मिक पुस्तक सब हमारी हैं। दिस इज ऑल कॉमन हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो इन सब के को कंपैरेटिवली भी हमें पढ़ना चाहिए, कोहेरेंटली पढ़ना चाहिए, और इंसानियत को कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रिलीजन से बाहर निकाल के ह्यूमैनिटेरियन रॉड सहारा पे लाना चाहिए, और ये बताना चाहिए बेसिकली रब एक है, इंसानियत एक है, और धर्म भी सबका एक है, धर्म भी दो नहीं हो सकते। जब इंसान एक है, ह्यूमैनिटी एक है, रब एक है, तो धर्म भी एक है। लेकिन उनको समझने का तरीका अलग अलग है, इम्प्लीकेशन का तरीका अलग अलग है। इसलिए हमें जैनिज्म के अनेकांतवाद और शादवाद का सहारा लेते हुए एक दूसरे को टॉलरेट भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया Professor Thomas, and thank you very much, Dr. Thomas, for giving me chance to speak in these great scholars. Yeah, thank you, Sir Habib साहब। आपने क्या है मजहब की जो रूहानी शक्ल को हाईलाइट करते हुए आपने शुरू किया, लेकिन कर्मकांड और संप्रदाय के की तरफ धर्म को, मजहब को फिसलते हुए देखकर आप व्यावहारिक संदर्भ में जो हो रहा है उसके ओर आपने इशारा किया। जब मजहब सियासत के हाथ में खिलौना बन जाए तो मजहब नहीं रह जाएगा और एथिक्स नहीं रह जाएगा। तो इस रूप में हम देखते हैं कि मजहब बहुत है लेकिन एथिक्स कमजोर हो गया। ये हमारी हालत हो जाती है। मजहब बहुत है दुनिया में, मजहब के नाम पर बहुत काम भी हो रहा है, बहुत प्रार्थना और इबादत और पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं एथिक्स में कमजोरी आ रही है। तो इसलिए पब्लिक लाइफ में हम हमारे भारत में भी देख रहे हैं
तो कई देशों में भी देख रहे हैं, ये बात पूरी दुनिया में भी है, सहनशील नहीं रह पाते हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक दूसरे के वो बात को हम का अंगीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको सहनशीलता की जरूरत है, खुली सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है। इंसानियत पहले, हमारा रब एक है, अब इंसानियत भी एक है, लेकिन इसके अलग अलग पहलू ही हम जी रहे हैं। और मजहब सिर्फ एक इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होते हुए, ये सब है ना, एक सिक्के के दो पहलू जैसे ही, अलग अलग पहलू है, अलग अलग नजरिए है, बस फर्क इतना ही है। जैसे स्त्री और पुरुष है ना, एक इंसानियत के दो दो टुकड़े हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी इस प्रकार अलग अलग नहीं है मजहब को लेकर। तो इसलिए मजहब है ना, सियासत के हाथ में खिलौना बन जाए तो फिर समाज की बर्बादी ही हमारे सामने कुछ है। इसलिए हमें सहनशील होना है कि खुली सोच को लेकर मूल्यों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। और कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा, जिसे आपने बताया, मजहब को व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। कर्मकांड को लेकर जो सैद्धांतिक अप्रोच है, उससे कुछ हटकर व्यावहारिक स्थिति में हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह नहीं सकते हैं, तो हमारा मजहब कोई भी हो क्या मतलब है, किस काम का है। तो इसलिए इस रूप में व्यावहारिक सोच को अपनी विकसित करनी चाहिए। तो प्रोफेसर हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके इस इंसाइट्स के लिए। मैं आगे क्या है, प्रोफेसर रावेल सिंह को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आप फॉर्मर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। प्रोफेसर रावेल सिंह। Thank you, Professor Thomas. Good evening to all. मैंने सभी विद्वानों को सुना और आई ओपनर था सभी का जो भाषण था, बट मैं इसको डिफरेंटली सोचता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को बैठे बैठे जो मैंने बोलना था वो मैंने साइड पर रख दिया, और आपको सभी को सुनने के बाद जब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ अंदर से, वो मैं अब 2-3 मिनट में अपनी बात करूंगा। कि मेरे लिए, क्योंकि आई बिलोंग टू सिखिज्म एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सिखिज्म, और मैं जब उसको पढ़ता हूँ, खास करके हमारे यहाँ जो गुरु ग्रंथ साहब जी है, उसमें जो फर्स्ट उसमें पोर्शन है जपजी साहिब, दैट इज बी कॉल्ड कंपेडियम ऑफ सिखिज्म के जो प्रिंसिपल है उसका वो कंपेडियम है। तो उसमें जो मैं डेली पढ़ता हूँ, उसको डेली पाठ करता हूँ, तो उसमें जो मेरे को समझ आती है, पहले तो जो अभी बात हो रही थी पॉलिटिक्स और धर्म की, और मैं समझता हूँ कि हमें जरूरत तभी पड़ी है आज के टॉपिक में बात करने की, इस टॉपिक पर, कि पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन ही हो रहा है। जब पॉलिटिक्स ने रिलीजन को यूज किया है, तब हमें ऐसी बातें सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। बट फॉर मी रिलीजन इज सेल्फ रियलाइजेशन। मैं समझता हूं कि जब जो धर्म को मानने वाला है सही अर्थों में, उसके मीनिंग्स समझता है धर्म के, किसी भी रिलीजन का न्याय हो सकता है, वो ही मे बी जैन, ही मे बी बुद्ध, ही मे बी क्रिश्चियन, ही मे बी मुस्लिम, उसकी सेल्फ रियलाइजेशन जो उस धर्म के अंदर जो उस पर रखा हुआ है, आदर्श दिए हुए हैं, आइडियलिज्म है उसका, कि उसमें सेल्फ रियलाइजेशन जो आत्म चिंतन है अपने आप, दरअसल वही नैतिकता की है, कुंजी है। मेरे लिए आप नैतिक हो ना हो, प्रोफेसर खान नैतिक हो ना हो, कोई और नैतिक हो ना, पहले मैं तो नैतिक हूं। मेरे लिए जरूरी है कि हाउ आई शुड बी एथिकल, और दैट इज आत्मचिंतन। हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ है कि जो नैतिकता की जो शिखर है उसको कहते हैं कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुट्टा पाल। सचियारा है वो एक अवस्था पे पहुंचना, और कूड़ा जिसपे उस अवस्था पे पहुंचने के लिए कौन सा मैं रास्ता लूं कि जो कूड़ है, झूठ है, उसकी कतार, उसकी लाइन टूट जाए। तो जब मैं ऐसे धर्म को लेता हूं
तो फिर मेरे लिए जो एथिकल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, मेरे लिए अपने लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं है। और उसमें जो सबसे पहले है कि जो मैं और वी का जो यात्रा है, मेरे को वो लग रहा है कि जब मैं अपने लिए सोचता हूँ फिर मैं हौमे का शिकार हूँ, व्हेन आई एम देयर। जो सेल्फलेसनेस है कि अपने से बात दुनिया के बारे में सोचना, अपने आप को साइड पर रख के दूसरों के बारे में सोचना, उसमें सभी कुछ नैतिकता उसी में अपने आप आ जाती है, जो सिमुलेट होती है। सो हमें तो जब 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 ये धर्मों के आप गुरु नानक देव जी ने 27 साल पूरी दुनिया की यात्रा करी और वक्त वक्त धर्मों के लोगों के साथ उनका डायलॉग है, और डायलॉग करते हुए वो बोलते हैं कि जब तक दुनिया रही है नानक किछ सुनिए कुछ कही है। ये सब जो जितने भी डिफरेंसेस हैं उसका एक ही हल है कि हम संवाद करें। और उसके लिए भी मैं समझता हूं कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है, आत्मचिंतन ही कुंजी है नैतिकता की। जब तक हम खुद नैतिक नहीं होते, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप नैतिक हों जब मैं ही नैतिक नहीं। पहले मेरे लिए नैतिकता जरूरी है, मेरे लिए लाजमी है कि मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूं। व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। हमारे यहाँ 5 खंड दिए हुए हैं जपजी साहब में, और वो लाइफ की एक पूरी पड़ाव है, लाइफ के फेसेस है लाइफ के। और वो 5 जो फेजेस हैं वो शुरू होते हैं ज्ञान खंड, कर्म खंड, सर्म खंड, धर्म खंड, फिर आ गया सच खंड। वो 5 फेजेस सेल्फ रियलाइजेशन की, कि कैसे कैसे कौन सी अवस्था में पहले बंदा होता है, फिर दूसरी में आता है, तीसरी में आता है, चौथी में आता है, जब अचीव कर लेता है फिर सचखंड की अवस्था है। और जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ गृहस्थ में उदासी की जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन में रहने के लिए हमारे लिए नैतिकता पहला असूल है, पहला प्रिंसिपल है कोएग्जिस्टेंस का। जब हम कहते हैं कि जब तक दुनिया रही है, की बात तो मैंने कर दी, कि जब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म जिसका नाम क्या है, जिसमें निर्मल हो जाए इंसान, वही धर्म श्रेष्ठ है। जिसके ऊपर चलने पर जिस नैतिक गुणों को अपने अंदर सिमुलेट करके इंसान निर्मल हो जाए। और निर्मलता का जो डेफिनेशन है वो हम सभी जानते हैं। सो अपने आप को कैसे निर्मल करना है, अपने आप को कैसे इन सभी चीजों, जो 5 हमारे यहाँ कहे जाते हैं कि 5 विकार हैं जो नैतिकता के रास्ते में हर्डल बनते हैं, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चीजें हैं जो मेरे लिए आत्मचिंतन के लिए सबसे बड़े हर्डल है। जब तक मैं इनको पार नहीं करता, मैं नैतिक गुणों को अपने अंदर सिमुलेट नहीं कर सकता, और मैं अच्छा धर्म को मानने वाला अच्छा धर्मी इंसान नहीं बन सकता। सो पहले अपने आप को ठीक करना मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है कि हम सोसाइटी को ठीक करने चल पड़े। हम लीडर नहीं हैं, हम सभी लगभग यहाँ पर जुड़े हुए लोग अध्यापक हैं। हम सिर्फ यही सिखा दें अपने स्टूडेंट्स को, यही बच्चों को सिखा दें कि हाउ टू डील विद यूर सेल्फ ओनली, हाउ टू डील विद माई सेल्फ ओनली। आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ रिलीजन। मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ इस विषय पर टाइम बहुत हो गया है। सो माफ करना, मैं इतनी बात करके अपनी बात खत्म करनी चाहूंगा। थैंक यू प्रोफेसर रवेल सिंह जी। आपने धर्म को सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मचिंतन के रूप में स्थापित कर दिया और उसे ही नैतिकता बता दिया। तो वही नैतिकता है, यानी वो
एक व्यक्ति के संदर्भ में सही मायने में आत्मचिंतन ही एक नैतिकता है। और आगे बढ़कर ये संवाद को और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को ही आपने नैतिकता बताया कि एक सामाजिक नैतिकता है। पहला आत्मचिंतन तो व्यक्तिगत नैतिकता है, व्यक्तिगत पहलू है। तो दूसरा सामाजिक पहलू है संवाद और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो यानी पहले खुद को दुरुस्त करना ये जरूरी है, तो खुद को दुरुस्त करना ही नैतिकता है। तो यदि इस प्रकार सभी व्यक्ति और सभी धार्मिक समुदाय खुद से शुरू करें और दूसरे की ओर जाए, सामाजिक पहलू की ओर जाए, संवाद करें, बातचीत करें, एक दूसरे के दोस्ती करें, तो फिर ये बात ये हम समाज बेहतर हो जाएगा। तो नैतिकता की एक व्यावहारिक व्याख्या आपने पेश की, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सिंह साहब। आगे मैं डॉक्टर कुसुम लूनिया जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आप फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी है अनुव्रत समिति न्यू दिल्ली की, डॉक्टर कुसुम लूनिया। Kindly unmute yourself. Kindly unmute yourself. Dr. Kusum? जी ओके। Yeah. भारत माँ को श्रद्धा वंदन, माँ सरस्वती को अभिवंदन है। यहाँ उपस्थित सभी जनों को स्नेह सिक्त सादर वंदन है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज के डायरेक्टर डॉक्टर एमडी थॉमस के आमंत्रण पर आज धर्म और नैतिकता वेबिनार में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की दोनों की संयुक्त राजभाषा सलाहकार समिति की सदस्य के रूप में मैं आप लोगों के साथ जुड़कर अपने आप को धन्य समझ रही हूँ। आज का जो विषय रखा है बहुत ही समीचीन विषय है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और देश और दुनिया की बेहतरी के लिए डॉक्टर एमडी थॉमस आप अपने साथ इतनी सुंदर टीम को लेकर जो ये वेबिनार कर रहे हैं, निश्चित ही इसका अच्छा फल आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी बात को मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों के साथ शुरू करती हूँ। है धर्म बस निस्वार्थता, है धर्म बस निस्वार्थता, प्रेम जिसका मूल है, भूले हुए हैं हम इसे, भूले हुए हैं हम इसे, कैसी हमारी भूल है। वास्तव में धर्महीन जीवन का दूसरा नाम ही सिद्धांतहीन जीवन है, और बिना सिद्धांत के जीवन वैसा ही होता है जैसे बिना पतवार की नाव। सब धर्मों की आत्मा एक ही है, पर वो आत्मा अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। लेकिन धर्म एक अत्यंत व्यक्तिगत चीज है, और जब हम इसको व्यक्तिगत रूप में अप्लाई करके किस तरह से रिजल्ट पा सकते हैं, मैं अपनी बात को अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ आपसे शेयर करती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा बेटा जब विदेश पढ़ने जाने वाला था, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा से प्रेरित होकर मैं भी उन्हें अपने गुरुजी के पास ले गई, और गुरुजी ने उनको मांसाहार, नशा परिहार और पर स्त्री गमन 3 व्रत दिलाए, और उसके जीवन में नशा मुक्ति, नैतिकता और सद्भावना उतरती चली गई। धैर्य और सामंजस्य उसके व्यवहार में आया, और आज वो 35 साल का लड़का, उसके नीचे 25 इंजीनियर और 400 लेबर काम कर रहे हैं, और वो देश के लिए 135 बिल्डिंगें बना रहा है, और जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है सरकार उसे श्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में रेखांकित कर रही है। ये है उस व्रत का असर। एक दूसरा उदाहरण, जब मुझे लगा कि ये मेरा तरीका थोड़ा सक्सेस हो रहा है युवा पीढ़ी के निर्माण का, जब दूसरा बेटा एसआरसीसी में था,
वहाँ की, तो फिर वो सीए और सीएस कर रहा था, टॉप रैंकिंग में था। तब मैं उनको भी गुरुजी के पास ले गई। वो आईएसबी हैदराबाद में गया, जहाँ उसने भी तीनों व्रत लिए, सेम मांसाहार, नशा मुक्ति, परिहार और पर स्त्री गमन, और नैतिकता, नशा मुक्ति, सत्य और ईमानदारी से। आईएसबी ने उसे नीदरलैंड आगे पढ़ने भेजा। 22 वर्ष के उस बच्चे ने 22 देशों की यात्राएं की, एज ए सीए लंदन, न्यूयॉर्क की कंपनियों की ऑडिट की, और आज वो 30 साल का लड़का प्लेओल के नाम से, उसके कई क्रिकेट, बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं, क्रिकेट एकेडमीज है, और कुछ स्टेडियम भी है। इन दोनों उदाहरणों से मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि व्यक्तिगत सफलता के लिए, जिसे हम नैतिकता या नीति कहते हैं, जब वो सामाजिक आदर्श हो जाता है तो वो धर्म के रूप में हो जाता है। वस्तुतः जो नैतिकता शब्द है वो नीति से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, यानी कि हम जो नीति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर ले जाए, या यूं कहें हम कि सत्य, दया, परोपकार, ईमानदारी, चरित्र निष्ठा, इंद्रिय संयम आदि तत्व नीति के तत्व हैं। इन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही देश और दुनिया का दिशा दर्शन दे सकता है। ये भी देखा है मैंने कि दुनिया के सब धर्मों को बारीकी से देखा जाए तो पता चल रहा है कि नीति के बिना धर्म नहीं टिकता है। सच्ची नीति का धर्म ही में समावेश हर जगह मिलेगा। अभी 2-4 दिन पहले ही मैं अखबार पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था 2021 में करप्शन का इंडेक्स बताता है कि भारत अभी 50वें नंबर पे है। हमारे देश को इस दिमक से छुटकारा कौन दिला सकता है? हमारी नैतिक युवा पीढ़ी। युवाओं के प्रेरक कौन है? हमारे पथदर्शक, शिक्षा गुरु, धर्म गुरु, उनके रोल मॉडल। तो मैं यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी पंक्तियां, जो उनकी पुस्तक यशस्वी मन में उन्होंने इंडियन युवाओं को समर्पित की है, वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। हे भारतीय युवा ज्ञानी और विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूंगा, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। ये प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर, उससे ऊपर या नीचे, जहां भी दीप जलाए रखूंगा, जिससे मेरा देश महान हो। देश की महानता का डॉक्टर कलाम का ये संकल्प राष्ट्र धर्म की प्रतिध्वनि है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि धर्म एक ही है, उसके सैकड़ों संस्करण हैं, यानी there is only one religion, through there are hundreds of versions of it। आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, धर्म सत्य है। सत्य देश और काल से अबाधित होता है। देश बदल जाते हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता। आज इसी धर्म की जरूरत है। जो अभी खान भाई ने कहा कि कट्टरता, मजहबी मदांधता, ये सब खोल जो धर्म के ऊपर चढ़ गए हैं, इन खोलों को आज सबको मिलकर फाड़ देने की जरूरत है। संभवतः इन स्थितियों को 75 वर्ष पूर्व ही एक भारत के महान समाज सुधारक आचार्य तुलसी ने समझ लिया था। जब आजादी का रक्तपात देखा तो उन्होंने असली आजादी अपनाओं के साथ अणुव्रत आंदोलन का, नैतिक आंदोलन का सूत्रपात 1 मार्च 1949 को राजस्थान के एक कस्बे सरदार शहर से करते हुए उन्होंने कहा कि अणुव्रत मानव जाति के लिए असांप्रदायिक धर्म आंदोलन है, जिसमें जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, भाषा, प्रांत, सांप्रदायिक संकीर्णता से ऊपर उठकर जीवन मूल्य, मानव मूल्यों का जीने का आमंत्रण है। अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। इसकी उन्होंने 11 सूत्रीय आचार संहिता बनाई,
जिसका पहला नियम, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। इसका दूसरा नियम, मैं आक्रमण नहीं करूंगा। इसका तीसरा नियम, मैं हिंसात्मक तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। इसका चौथा नियम, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। पांचवा नियम, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। छठा नियम, व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। और सातवां नियम, ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा करूंगा। आठवां नियम, चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। नौवां, मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। और 10वां, व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। और 11वां, पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा और पानी, बिजली आदि का संयम करूंगा। तो इस 11 सूत्रीय आचार संहिता जो अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से शुरू हुई, इसका मूल वाक्य, आज ये आंदोलन यूएनओ से भी एफिलिएटेड है, लाखों करोड़ों लोग मिलकर इस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जो दुनिया को हम चाहते हैं सुंदर बनाना, वो कर पाएंगे। लेकिन यहाँ भी आचार्य तुलसी ने यही कहा कि पहले निज पे शासन, फिर अनुशासन। पहले स्वयं बदले, तब हम सबको बदल सकते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ विचार शेयर करके बहुत अच्छा लगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, आओ नैतिकता की जोत जलाएं, आओ नैतिकता की जोत जलाएं, अध्यात्म प्रकाश से दुनिया जगमगाएं, अध्यात्म प्रकाश से दुनिया जगमगाएं। धन्यवाद। या डॉक्टर कुसुम लूनिया जी ने क्या है वो मैथिली शरण गुप्त के वो कविता पेश करके ये बताया कि प्रेम जिसका मूल है वही टिकेगा। तो प्रेम नैतिकता का मूल है, इसके केंद्र में है। और नीति के बगैर धर्म कहीं टिकता नहीं है। अनुव्रत ही एक नैतिकता है अपने आप में, मतलब हिंसा नहीं करना दूसरे की। लेकिन ये अनुव्रत ही संयम का एक तरीका भी है। लेकिन हम जानते हैं कि हम समाज में बहुत हिंसा होती है, शब्दों से, विचार से और व्यवहार से, और शरीर की भी कत्ल करते हुए भी आदि आदि है। फिर नैतिकता का इस अध्यात्म को मजबूत करना होगा। ये आपने ये सभी बातें बताई डॉक्टर कुसुम जी, आपका धन्यवाद। अब कुछ और लोग जुड़ने वाले थे, किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं। We have some time with us for a second round of fine tuning. आपने बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स अलग अलग नजरिए से, अलग अलग दृष्टिकोण से आपने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। और इस विषय को और तरफ फाइन ट्यून करते हुए 2-2 मिनट आप ले सकते हैं। मुझे लगता है 7 बजे तक हम जाएंगे, 7 बजे खत्म कर दें। ठीक है। हाँ, 7 बजे किसी भी हालत में हम खत्म कर रहे हैं। तो 2-2 मिनट आप लेके, मतलब कुछ नई बातों में नहीं जाते हुए, मतलब कुछ फाइन ट्यूनिंग करते हुए इस विषय को, जो इंसाइट्स हमारे सामने आए हैं, the good insights that came up, you know, to fine tune them in terms of a conclusion of our discussion. सर, मैं विदा चाहूंगी, क्षमा, दूसरा कमिटमेंट है, मैं विदा चाहूंगी। अच्छा, आप जी जी, ठीक है। बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। धन्यवाद। या कौन शुरू करना चाहेंगे? May I make an intervention? Yeah, sure. Yeah, I would like to respond to Mohammed Habib ji's comment, which I think is absolutely right. I often say this very boldly in a classroom that
contemporary world has, in contemporary religions of the world or practice of religions in the world, there is very little place for ethics. And I think if we have to look at the context, and I must congratulate Muhammad the Habib Jeeves for his the boldness with which he made his point about how we need to call a spade and agree that in India there is very little space for ethics in the way we practice religion. I'm not talking about the scriptures, but the way we practice religion, particularly the politicization of religion, there is very little space for ethics. And I just want to say two things, which one obviously with which I agree, and he has commented on it, and I think that must be done because I don't see it happening in the national education policy, is that one, I think secularization of ethics must take place. Yes, ethics is related to religion, but that doesn't mean that a religious ethics has to be taught. It has to be a secular ethics in order to promote religion. If you teach a religious ethics, it is not really going to help as far as religion is concerned. So I also have a problem with which, people say that you stay away from alcohol and women, particularly another human life, which is women, then that is seen as ethical. And the second thing, although I'm not going to stray off from my path, I just want to complete. The second thing which Muhammad Habib says, which I think is so important, is that let me give my, I often am not autobiographical, but let me say this. I studied in Nigeria, a country in Africa. And in that school where I studied, two religions were offered as a discipline. This is not making me Muslim or Christian. I am not Muslim or Christian, but Islamic religious knowledge and Christian religious knowledge were taught. And as a Hindu, I was told that if you want, you can sit outside the class, there is no problem. But I chose Christian religious knowledge because I said, what is the point of sitting outside the class? And it was not to convert me to Christianity. It was to teach me civic ethics, that I'm learning ethics. Remember, from all maths, social science, biology, language, nothing teaches you ethics. It is religious in a secular way that teaches you ethics. And that is what, interestingly, and I must share this with you, I got 100 out of 100 in Christian religious knowledge. And as a Hindu, it was accepted. There was no problem. No, how can a Hindu top the class when you have Christians sitting in the class? And I think that is what we require in this country, to teach, even if it is through religion, a secular ethics. But I know that in the schools that we have no place. We talk a lot about religion, but we have no place for a secular ethics imparting of through religion. Religion is a means here. Ethics is the end. Thank you, Muhammad Habibji. That was excellent. Yeah, that was a great intervention, and a substantial comment is amidst the we need to address the politicization of religion and the mess that is happening in our country. In spite of the fact that we have all the major and minor religions of the world in our country, a very great country, so to say. But unfortunately, the politicians and vested interests are plundering all that for the benefit of it. And unfortunately, our younger generation are paying for it. The senior generation who, like Professor Lajurthi said, the classrooms, the rich teaching they received, because of which good sense prevails. But unfortunately, the younger generation are not receiving this. So this politicization of religion is plundering with ethics actually. Our situation, practical situation, as rightly noted, that there is a, if I say it this way, there is too much of religion and too little of ethics. Plenty of religion, but ethics is hardly anywhere. Private life also, but public life all the more. Public life, people they are custodians of the country, custodians of the tradition, custodians of religion, everything. But there's hardly any ethics in the public sphere. Lies being spoken. सरासर झूठ बोला जा रहा है. ये यंगर जनरेशन को यही सिखा रहे हैं. क्लासरूम में अच्छी बातें बताई जा रही है, लेकिन पब्लिक लाइफ में जो झूठ बोला जा रहा है, वो उससे यंगर जनरेशन गुजर जाते हैं. तो ये बड़ी शोचनीय बात है
सोचने की बात है कि secular ethics has to come up, you know, that one has to learn the ethical value system of all religions and even non-religious traditions. So a secular, yani all-inclusive approach is the only way by which we can save our country and save our society. So that is the practical way. So thank you very much for that great comment and insightful comment. Again, Yeah, I just want to say one thing that uh, we also teach. I primarily teach sociology of religion in my class every year. This is lectures are given. I think what is more important here is to move out from classroom practices to the public life, public sphere. This is the need of the hour. As long as we are going to be more theoretical, it's not going to help us. If we are not incorporating ourselves, if we are not changing ourselves into our behaviors, into our practical aspects, I think that this is not going to make a much difference in our life. And this should be done primarily right from the beginning. Right from it can start from the family, the schools, colleges, university. All of us can together work and start shaping a new uh, 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 beliefs and practices for youths, and that will definitely help to shape up country as large as what we are expecting today in a secular mode. Secular ethical values should be incorporated to everyone. This is what I would like to urge upon right now. Thank you. yeah, that's a great realization and insight that you have to move out of the classrooms to the Yes. practical world to shape up the future of the younger generation and shape up the country better. Yes. Well, Thank you, sir. it's a Himalayan job in our Yes, hands today. Himalayan job. Yes. Exactly, especially in the very odd times of today. Odd times, I think. I think I will also agree with you that in the younger days, you know, even when we were students and young people, the world was better, I suppose. I have a feel that way. As we are aging, we are seeing a world which is maybe to be more regretted. Unfortunately, towards the end of our lives, you know, we are seeing maybe worse days. This is a matter of regret. Inside हमको बहुत खराब लगता है भाई हम क्या दिन देख रहे हैं हम चाहते हैं कि बेटर डेज देखें हमारे हमारे जो हमारे बचपन में जो दिन हमने देखे थे जवानी में देखे थे और उससे बेहतर दिन हमारे बच्चों के लिए हम दे सके वो देख सके तो हमारे लिए है कि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन but unfortunately we are seeing the little opposite. So it's a Himalayan job. At the same time, I think we together have to do well the cat. We have to well the cat to the best of our capacity. Thank you, sir, for that Yes, insight. thank Yeah. you. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Dr. Thomas, Yeah. if I'm Yeah. allowed to say Yeah. something. Yeah. In Yeah. reference to Professor Lajvanti and Professor Habib, I would like to read Dr. Radha Krishnan, who was former president of India, who in his book Recovery of Faith on page 184 has said that, who has explained secularism. He has said, when India is said to be a secular state, it does not mean that we reject the reality of an unseen spirit or the relevance of religion to life, or that we exalt irreligion. It doesn't mean that secularism itself become a positive religion or the state assume a divine prerogative. We hold that not one religion should be given a preferential status, and the view of religious impartiality or comprehension and forbearance has a prophetic role to play within the national as well as international life. So he has foreseen that how secularism should be taken up by the society so that our future see something which is impartial of biased
biased attitude towards a particular religion. This is what he actually, I think our former leaders, they've always wanted that country should see those phases where everyone is equal and we are not biased by any particular religion. Because I firmly again believe that secular ethics demand logic, empathy, reason, and moral intuition. And unfortunately, this moral intuition has disappeared from our society, from our classroom teachings. That you rightly said that in schools, the moral, this secularism, yeah, equal the ethics to follow the religion are, missing. They have disappeared from the syllabus, and there is a vast difference what we study in the school and what we see in practical outside in the society or in the day-to-day life. That has created a difference of opinion among the children itself. And this is our generation who is going to, lead us. And if we are not giving them that ground, how can we expect a good society or a good place to live in? This is the basis. And unfortunately, in today's scenario, as we have taken religion into politics, all this is missing. Only few very less empathy towards good ethics is being followed right now, which is unfortunate, which is actually unfortunate. So I feel it's a duty of we people to take to make sure that our generation learn good ethics and follow good examples, so that we remain secular as our constitution wants us to be, for a good future of India. Exactly, yeah. Thank you. Exactly. Yeah. The secular credentials of the Constitution is, the genius of the Constitution actually. It has the best of ethics, all inclusive. It is not negating the religious. It is all inclusive, being all inclusive, being open-minded and accepting that. And that is the center, that is actually the sacred scripture of all the citizens of the country. Beyond all religions. Well, unfortunately, there's a contradiction between the classroom and outside the classroom. And I think how we can stress this secular credentials, because we have the battalion of younger generation in our hands. How do we deal with them towards making them better human beings, for preparing them for better days ahead? That is the challenge before us. Well, yeah. Who else would like to add? Professor Khan? Yeah. Thank you very much. Let me congratulate Dr. Thomas on this beautiful theme and very valuable ideas expressed by participants all around. We have to fight another big battle, and that is how to stop hijacking of religion to destroy religious ethics, particularly in context of India. India has got such a beautiful heterogeneity all over, and it is backed by our culture, by our tradition, by our way of life, by our language, by our philosophy, everything. And in spite of everything, you are seeing that we are going in the direction of destroying one institution after another, because in India, religion has got a mass appeal. And that mass appeal is being misused by
certain quarters, and that is being made a tool of vote mobilization kind of a thing, and that has made the whole difference in Indian context. I think the Institute of Objective Studies, my chairman, and your Institute of Harmony and Peace, they should also come forward and look into Indian situations scientifically and from the point of view of research methodology and surveys and everything. How can we put forward a new formula of governance in this country so that the constitutional principles that, for which we are proud of, these constitutional principles are preserved and practiced. Thank you very much. Yeah, right, sir. We have a great battle to fight. A great battle to fight, from which we have no escape. We have no escape from that. If we have to save faith, if we have to save ethics, if we have to save humanity, if we have to save our country, I think we have no escape from that fight, which we have to fight. And that has to contribute to good governance. Let's not talk about good governance, but in a good governance, we need a microscope to see where it is and how much it is. Yeah. So therefore, I think that to contribute to good governance, which is not a mercy, which is the right of all the citizens. Unfortunately, that right is being exploited. So, well, sir, we have a great battle to fight. So, thank you for the great insight. Yeah. Thank you. Yeah. So nice. Who else? Who else, sir? Who else? We have a few more minutes. Achha. I think we have all finished our things. Okay. I think, yeah. Well, it has been, I think I will conclude in 2 minutes. Well, it has been very nice coming together. I think I'm really happy. Maybe the best webinar we had. We were only few, and but then great insights, great realizations, and very frankly, they came out, and that is a source of strengthening each other, tuning each other towards what we should do. Well, some of the realizations are really painful, as we are senior citizens or becoming senior citizens soon, and as professors and educated people, we were missing something which in the younger days we enjoyed. In our youthhood we enjoyed. As we have become seniors, and we are missing something which we cherished actually. Well, I think we shouldn't lose heart. We shouldn't lose it. We shouldn't surrender. Leaving our हथियार डाल के हमको मैदान से भागना नहीं है. Military has a principle. One who हथियार डाल के मैदान छोड़ के जो भागता है उसको शूट करने का नियम है मिलिट्री. क्योंकि उसको जीने का हक नहीं है. जीने का हक नहीं है, लेकिन उसे वो मिलिट्री में किसी काम का नहीं है. So we shouldn't surrender and run away or do nothing. So I think it's a great realization that we have the younger generation in our hands. Life is a relay race, and we as seniors, we have a duty to hand over something better to the younger generation. That's the relay race, and in that we have a great duty in our hands, and together, rising above petty concerns and political concerns and even communal concerns, we need to, I think, as enlightened persons, we need to come together, be more inclusive,
And strengthening the ethical fiber, I think we need to ensure, do speak right and come together to make sure that our country, the secular credentials of our country is kept intact, and our younger generation and have something better to look for. And I think that is the realization, I think, coming forward. And it has been very edifying, very enlightening, very boosting, and one better than the other. Like, I'm really happy, and I am grateful to each one of you for your time, for your trouble, and for your hard-earned insights and realizations. And that, I think, is boosting for each one of us. I wish and pray that the same God of all of us, whose children we are brothers and sisters of one another, may that blessings of God may help us achieve our objectives in life, and to make sure a better country and a better society for us to have our life, and especially for the new generation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you, Father. Thank you for organizing this kind of webinar. Yeah. Thank you very much. I'm thankful to the comments of Dr. Monica Sharma and Dr. Chetani and all other scholars. Thank you very much for such a kind of the webinar. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much.